In 2019, Bangladesh's real GDP growth rate was roughly 8% and India's real GDP growth rate was only 4%. By 2020, Bangladesh overtook India in terms of per capita GDP. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देखिए स्मैन रिएक्शंस। तो जी आज मैं आप लोग से बात करने वाली हूँ इंडियन मीडिया की स्पेशली, क्योंकि जब से अब बांग्लादेश ने IMF और वर्ल्ड बैंक की जानिब से काफ़ी सारा कर्ज लिया है, इंडिया की जानिब से बातें की जा रही हैं कि बांग्लादेश जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। बांग्लादेश में खाने के लाले पड़ गए हैं, बहुत बुरे हालात हो गए हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हो गए हैं जिसकी वजह से अब बांग्लादेश ने डिसाइड किया है कि वो IMF से लोन ले लेते हैं और जो अपनी मुश्किलात हैं उनको आसान कर लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स की जानिब से इस पर बात की गई, जिनमें से काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर की। आज इस चीज़ को लेकर बात करेंगे। इंडिया मीडिया की जानिब से इस पर बात की जा रही है। वो कह रहे हैं जी कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे अब दोबारा एक बार फिर तूफ़ान आने वाला है। लाइक इससे पहले श्रीलंका में जो हालात हैं वो सबके सामने, जिस तरह वो बैंकरप्ट हुआ, और बांग्लादेश के बारे में भी इसी तरह की बातें की गई कि जी बैंकरप्ट हो जाएगा बांग्लादेश, और अब बांग्लादेश के पास रिज़र्व जो है डे बाई डे कम हो गए हैं, इतने महीने का रिज़र्व रह गया, इतने महीने का जो खर्च है बांग्लादेश के पास रह गया है। तो उसी चीज़ को लेके ये इंडियन मीडिया के बंदे हैं ये बात करेंगे। वेल लेट्स सी इसको ये कैसे बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं बांग्लादेश के बारे में, और इनको ये सब बातें जो कही जा रही हैं वो सही लग रही हैं, इनकी क्या ऑब्जर्वेशन है। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लाजमी नोटिफिकेशन मिले। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। In 2019, Bangladesh's real GDP growth rate was roughly 8% and India's real GDP growth rate was only 4%. By 2020, Bangladesh overtook India in terms of per capita GDP, which simply meant that an average Bangladeshi was richer than an average Indian. On top of this, if you align the fact that the labor force participation of females in Bangladesh is roughly 40% and in India it is almost half, which is around 20%, then that again presents Bangladesh's economy in a very positive light. But despite all these positives, right now Bangladesh is availing a loan from IMF. Why is that the case, and is Bangladesh going to become the next Sri Lanka, will be the focus of our discussion on today's video. We will understand three key central points. Number one, what is exactly happening in Bangladesh? Number two, what is exactly happening in South Asia right now, that countries like Sri Lanka, Pakistan have almost gone bankrupt. Bangladesh again is reaching out to IMF. Is similar situation going to happen in India, or is it not going to happen in India? And finally, we will understand that what are the pros and cons of the Indian economy right now. Will it grow from this point? Will it not grow from this point? That is the precise discussion that we are going to have. So let us set some context as to what is exactly happening in Bangladesh. Now, a large part of Bangladeshi economy depends on the export of garment, and in fact, it is the second largest garment producer of the world. A lot of garment manufacturing happens in Bangladesh, and that is one of the reasons why we see very high female workforce participation in Bangladesh. And whatever garments are produced in Bangladesh, a large chunk of it is sent to Western economies where the cost of production of garment is fairly high. So as you can imagine, from 2020 onwards, the situation has not been good. The inflation is rising, especially in America, especially in Europe, which are one of the biggest consumers of the export of garments which comes from Bangladesh. Now, with the latest supply chain disruption that happened due to Russia-Ukraine war and a lot of foreign investors pulling their money out of South Asia, so South Asia comprises of India and some of the other neighboring countries, what has ended up happening are two specific points. One is that the inflation across developed countries has increased. For example, you might have seen that the inflation in the US is touching almost 9.5%. In UK, it is touching almost 10%. So this is impacting the demand of goods from Bangladesh. That's point one. Point two is the risk profile of South Asian countries has gone up, which is reflected into the cost of capital. So cost of capital in very easy to understand terms means that at what rate the entrepreneurs are getting capital to set up their businesses, start new ventures, etc., etc. So from that particular perspective, given the fact that all these emerging economies, India included, our cost of capital has gone up. Why? Because of the supply chain disruption, a lot of investors want to move to slightly more stable economies. So in this entire game, a fast growth economy like Bangladesh has started to suffer a lot. Not only has trade deficit increased, even the inflation in Bangladesh has increased quite a bit. So let us look at some data as to whether or not Bangladesh will become the next Sri Lanka. Is the situation really
really bad there, something similar to Pakistan or Sri Lanka. Let me show you some data around it. Now, the first data point is regarding the forex. And if you have been reading Indian newspaper, you would have again read the term that India's forex is also shrinking. So something similar is happening in Bangladesh too. Is that situation alarming? The answer is yes and no. It is alarming because of the fact that they can only buy stuff that they are importing for the next 4 months only if they depend completely on their forex reserve. So this is a slightly alarming situation. What is the situation in India? That we have forex reserves which are good enough for us to survive for the next 10 months at least. So we have a longer buffer compared to a country like Bangladesh. Sri Lanka has already gone bankrupt and Pakistan is also on the verge of bankruptcy. The second key point that you need to know about Bangladesh's economy is that similar to India, they are an energy hungry country, and in order to meet their energy needs, for example, in terms of scaling up enterprises, in terms of electricity needs, etc., they import a lot of energy in the form of oil or gas. Now, due to Russia-Ukraine crisis, their energy inflation in the country has gone up, and the projections are there that up until 2026, there will be a lot of power cuts in Bangladesh. Now, the third key point about Bangladesh is that they are very prone to climatic changes. They are one of the most impacted countries that will suffer the bad side of the climate change simply because it's a low-lying country. You might have heard of Sundarbans. Tell me in the comment box where Sundarbans are in India also, and even that region in India is going to suffer due to climatic changes as the water level rises. That is going to create geographical impact and will impact the livelihood of the people living in that area. And it is estimated that approximately 15% of the Bangladeshis will suffer direct impact of climate change due to increasing water levels. Now, as a result of all these factors, what is happening in Bangladesh is that Bangladesh has approached IMF for taking a loan. They have not disclosed the amount of loan that they are going to take, but they are going to take a loan as a preemptive measure. So preemptive measure means that, for example, if you don't want to have heart diseases or diabetes, then what would you do preemptively? You would go exercise daily, eat the right kind of food, etc., etc. That is called as preventive or preemptive measure. But once diabetes happens, you have to cure it. So diabetes or some kind of health problem in the economy has already happened in Sri Lanka and Pakistan, and they are on the verge of going bankrupt. But Bangladesh has been sensible, so to say, in terms of taking some preemptive steps and putting in some precautions, and taking this IMF loan is one part of that story. Now let me present some very interesting data comparing countries like India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka's economy, and what exactly is going right for India and not going right for countries like Sri Lanka, or even to a certain degree for a country like Bangladesh. Just to set some context here, here's a graphic which will outline the fact that Sri Lanka's per capita GDP is almost 2 times that of India. What does that mean? That an average Sri Lankan is 2 times richer than an average Indian. But despite that, India is the one that is giving $2 billion of foreign aid to Sri Lanka to help them overcome the crisis that they are currently in. Why is that the case? This following data will help you make a little bit of sense. Now, there are 4 specific data points that you should look at. First and foremost, you need to understand the strength of every economy. For example, when it comes to India, the strength of the economy is the productive workforce, where we are growing, the strength of foreign relations, the type of politics that exists, the level of corruption that exists. So compared to other South Asian countries, the overall macro indicators for India is much more positive. For example, let me show you the corruption rank of India, and here look at the improvement of the things. For example, you can clearly see that back around 2014, 2013, our rank was around 94. Then over time it has improved. Now we are at 85th, which is a progress, so to say. On the flip side, here is the data for Sri Lanka, and you can clearly see that its ranking was getting worse when it came to corruption index, up until the point it absolutely went bankrupt. Now, the second data point could be the forex reserve point. I had made a separate video on this topic altogether when there was a lot of noise that, hey, India's forex reserves are going down, etc., etc. Is that a sign to worry? The answer is no, because India has managed its forex reserve well. India has actually allowed the rupee to slip. Yes, it hurts a lot of people, but just the depreciation of rupee does not make the nation bankrupt, because at that stage, if your rupee is getting weakened, it can lead to more foreign investments. Why is that the case? Because Indian market becomes slightly inexpensive for foreign investors. Similarly, a lot of exporters of Indian goods, they will benefit if Indian rupee is falling. Now, the biggest indicator of all this is the number of months of forex reserve that we are left with, because it allows RBI to sell or buy US dollar to manage a certain level of INR as per internal dynamics of the country. So from that particular perspective, RBI has said that they have roughly 10 months of forex reserve with them. There is nothing to worry about from that perspective. In Bangladesh, it is close to 4 months. In Pakistan, it is close to 4 to 5 weeks now.
Now, third and a very critical point between India and other South Asian countries is the fact that India's export is very, very diverse. For example, here is a breakup of what we are exporting in what percentage amount. So you can categorically see that when it comes to petrochemical processed goods, we are exporting approximately 14%. When it comes to pearls, precious stones, metals, we are exporting approximately 10%. And similarly, you can see the small breakup. But when it comes to some of the other South Asian countries, for example, let's pick Bangladesh, here is their breakup of export, which is very worrying. For example, almost 83% of their export is into clothing. Now, what has happened is that as the inflation in the Western countries has gone up, the demand for clothing, even from Bangladesh, has gone down because people just do not have the same level of demand as there was previously. Will this situation improve going forward? Hopefully it will, but to cut the long story short, Bangladesh is over. ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया और पर कैपिटा को लेके, जीडीपी को लेके कि बांग्लादेश की जो जीडीपी है इंडिया से बेहतर रही। लाइक जब कोविड था बांग्लादेश 8% फॉलो कर रहा था, जबकि इंडिया की जो जीडीपी थी वो 4% थी और पर कैपिटा जो है वो भी ज़्यादा है। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो श्रीलंका है उनकी पर कैपिटा इंडिया से बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद भी वो बैंकरप्ट हुआ और इसके बावजूद भी इंडिया जो है एक बड़ी एड श्रीलंका को हर साल दे रहा है। जब भी उनको ज़रूरत होती है श्रीलंका की हेल्प की जा रही है इंडिया की जानिब से, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट की बात की कि डे बाय डे जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, ग्लोबल इन्फ्लेशन जारी है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी डिमांड जो है वो कम हो गई है। लाइक अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की क्योंकि टेक्सटाइल का बड़ा हिस्सा लाइक 80 से 90% हिस्सा जो है अमेरिका को जाता है, अमेरिका एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश। तो यहाँ अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो गया है तो इन चीज़ों की डिमांड जो है वो कम हो गई है और इसकी वजह से ये जो एक्सपोर्ट हैं वो भी गिर गई हैं। इसके बाद जो इंपोर्ट्स हैं उन पे काफ़ी सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा है चूँकि बांग्लादेश को, इसलिए बांग्लादेश ने अपने रिज़र्व्स को मैनेज करने के लिए कि कोई सख्त किस्म के हालात पैदा ना हो, उससे पहले ही काम करना स्टार्ट कर दिया है और IMF से लोन ले लिया है। यहाँ पे इनका कहना था कि थोड़ी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बांग्लादेश में है। लाइक यहाँ पे इन्होंने टेक्सटाइल की बात की कि बांग्लादेश एक ही टाइप की चीज़ें हैं जो कि एक्सपोर्ट करता है, जबकि अगर इंडिया की बात करें तो काफ़ी डाइवर्सिटी है और काफ़ी डिफरेंट एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इंडिया और बांग्लादेश का एक अच्छा कंपैरिजन किया और इनकी वैसे मुझे जो इंडियन मीडिया की जानिब से कुछ न्यूज़ हैं वो मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। थोड़ा सा सेंस जिसको कहते हैं ना, सेंस, कॉमन सेंस से बात की है इन्होंने जो कि मैं फुली जिसको अंडरस्टैंड किया है और पाकिस्तान पे अगर उसको लगाया जाए। लाइक इन्होंने कहा कि जब भी किसी मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लाइक स्पेशली जब भी करप्शन की जाती है तो करप्शन का पैसा जो है उस कंट्री में नहीं रखा जाता बल्कि दूसरी कंट्रीज़ में भेज दिया जाता है। तो ऐसी सूरत में जी रिज़र्व्स में कमी आती है और रिज़र्व्स डे बाय डे गिरते जाते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं और जी मुल्क जो है बैंकरप्ट हो जाता है। श्रीलंका में भी यही चीज़ हुई कि इतनी ज़्यादा करप्शन इंक्रीज़ हो गई कि जो डॉलर्स हैं धड़ाधड़ दूसरी कंट्रीज़ में भेज दिए गए, ठीक है। मुल्क में डॉलर्स की कमी हो गई और मुल्क जो है बैंकरप्ट हो गया। यहाँ पे साथ ही मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में भी ये हालात बन चुके हैं। अब आगे क्या होगा पाकिस्तान का, वेल लेट्स सी। और हो सकता है पाकिस्तान गिरते गिरते संभल जाए। यहाँ जो करप्शन की बात है वो भी पाकिस्तान पे लाइक इम्प्लीमेंट की जा सकती है कि पाकिस्तान में भी करप्शन इतनी ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है कि इतना सारा पैसा पाकिस्तान से उठा के अदर कंट्रीज़ में भेजा गया है जिसकी वजह से हालात जो हैं काफ़ी ज़्यादा संगीन हो गए हैं। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, आप लोग इस को कैसे देखते हैं, इनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था, आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, लाइक का बटन सामने उससे जल्दी से क्लिक कर दें। वीडियो को लाजमी शेयर करना है। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लाजमी नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। I will see you guys till then. Take care. Allah Hafiz.